रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में जो जॉब्स शेयर करूँगी वो जॉब्स आई थी डॉन संडे नवंबर 26, 2023 के अखबार में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग वैकेंसी अनाउंसमेंट। कायद-ए-आज़म चेयर इन पाकिस्तान स्टडीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली USA। द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये मैं आप लोगों को यहाँ से बता देती हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिक एलिजिबिलिटी नंबर 1, PhD डिग्री फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी / institution in Pakistan studies or humanities and social sciences having significant post PhD teaching / research experience in a recognized university / center research organization. Number 3, a respectable number of publications in the last 5 years in the HEC recognized journals. Other requirements: maximum 55 years of age on the closing date of the advertisement will be eligible. Must be proficient in English language. Familiarity with culture, institutions and people of the host country. Capacity and competence of leadership to project the language, history and culture of Pakistan in the host country. Experience in mentoring, advocacy, communication, organizational (government / semi-government) at senior (close), budget management, research, grants, diplomatic, media relations as spokesperson and demonstrated इन्वॉल्वमेंट इन एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन एक्सेट्रा। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स ये आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके इसको पढ़ लें कि ये बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस: द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट विल इनिशियली बी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years ऑन डेप्यूटेशन बेसिस / कॉन्ट्रैक्ट basis, extendable to a maximum of 3 years on yearly basis, subject to satisfactory performance based on evaluation quarterly basis. The pay and allowance would be equivalent of BS 20 / BS 21 on the prescribed terms and conditions of Government of Pakistan. Provisional details of terms and conditions are available at ब्रैकेट में लिखा हुआ है http://www.mofept.gov.pk www.mofept.gov.pk. Last date of submission of application: the hard copy of application along with CV and supporting documents and application form should reach the undersigned within 15 days from the date of publication of this advertisement, जो कि है डॉन संडे 26 November 2023 in the press. All applicants are also required to submit online application at www.mofept.gov.pk. Applications received after due date will not be considered. Those already in government / semi-government service are required to apply through proper channel. Only short-listed candidates in order of merit will be called for interview. No TA/TA shall be admissible for interview. Ministry reserves the right not to fill the vacancy without assigning any reason thereof. ब्रैकेट में लिखा हुआ है रज़िया रमज़ान डोसा,
डेप्यूटी सेक्रेटरी ब्रैकेट में लिखा हुआ है पीटी, रूम नंबर 235 सेकंड फ्लोर, डी फॉर डॉक्टर, ब्लॉक पाकिस्तान, सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद. Online applications are to be submitted at www.mofept.gov.pk, www.mofept.gov.pk. अच्छा जी, एक और जॉब है, पोजीशन वैकेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है PASDEC ब्रैकेट क्लोज, इज अ सेक्टर development company incorporated under section 42 company under Ministry of Industries and Production. अच्छा, ये मैं बता देती हूँ आपको. क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी, मस्ट possess at least a graduate degree, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनिमम 16 years of education in engineering, business administration, accounts/finance, economics and other relevant subjects. Members of professional accountancy bodies are so eligible to apply. At least 20 years total post qualification experience in well reputed local or multinational organizations, of which preferably 5 years experience should be at department/functional head or higher level. Must possess leadership qualities and resilience to work in challenging circumstances. Age limit must not have attained 60 years of age at the closing date of the advertisement. Pay package, successful candidate will be offered a competitive remuneration package commensurate with his/her academic and experience profile. Terms and conditions, appointment will be made purely on merit. PASDEC is an equal opportunity employer. Females are encouraged to apply. Only shortlisted applicants will be invited for interviews. The candidate shall not be entitled for any TA/TA while appearing for an interview. Suitability of the candidates will be judged by the board, whose decision will be final. The company reserves the right to cancel the recruitment process at any stage. Former CEOs of PASDEC who had applied in the past for reappointment and were not selected will not be considered. Candidates attempting to influence the process will be disqualified. Applications on the prescribed format, declaration of eligibility, bracket available for download at www.pasdac.org.pk bracket close. Detailed CV along with CNIC and latest photograph must be sent through email at chairpersonpasdec100@gmail.com, chairpersonpasdec100@gmail.com, mentioning application for CEO in subject line within 15 working days of publication of the advertisement. Publication date is 26th November 2023, Dawn Sunday newspaper. The applications can also be couriered at following address to Chairperson PASDEC, Pakistan Stone Development Company, PASDEC, second floor ICCI building, G-8/1, Islamabad, Pakistan. Phone number 925192634657, 925192634657. Website www.pasdec.com.pk, www.pasdec.com.pk. Email chairperson pasdec100@gmail.com, chairperson pasdec100@gmail.com. एक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है, 26 नवंबर के अखबार की ही है ये. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैकेंसी अनाउंसमेंट. National Disaster Management Authority (NDMA) seeks to hire the services of eligible candidates
purely on contract basis on lump sum package for an initial period of 6 months. These purely contractual posts are extendable on requirement basis. The posts will be filled on open merit basis as per detail given below. सीरियल नंबर 1, नेम ऑफ पोस्ट मैनेजर एंटरप्राइजेस ब्रैकेट में लिखा हुआ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लमसम पैकेज इक्विवेलेंट टू प्रोजेक्ट पे स्केल 9, नंबर ऑफ वैकेंसी सबकी 1 है, ठीक है। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी मैनेजर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोबाइल मोबाइल ऐप 1/iOS 8। तीसरी पोजीशन है डेप्यूटी मैनेजर मोबाइल ऐप 2/Android 8। डेप्यूटी मैनेजर ब्रैकेट में लिखा है फ्रंट एंड 1 8, डेप्यूटी मैनेजर बैक एंड 1 8, डेप्यूटी मैनेजर फ्रंट एंड 2 8, डेप्यूटी मैनेजर बैक एंड 2 8, डेप्यूटी मैनेजर डेटाबेस 1 8, डेप्यूटी मैनेजर डेटाबेस 2 8, डेप्यूटी मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 8, असिस्टेंट मैनेजर डेटा सपोर्ट 7, असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट 3 7, असिस्टेंट मैनेजर GIS डेवलपमेंट 4 7, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस 2 7, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस 3 7, असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस 4 7, असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 7। Instructions: eligible candidates must send hard copy to PO Box number 3356, PO Box number 3356, GPO Islamabad, within 15 days of publication of this advertisement and may apply online through National Job Portal www.njb.gov.pk www.njp.gov.pk. The detailed job descriptions of the advertised posts are available on NDMA website http://cms.ndma.gov.pk/careers http://cms.ndma.gov.pk/careers. Name of the post for which the application is made should be clearly mentioned on the top right corner on an envelope. Only shortlisted candidates will be called for the test/interview as the case may be. The shortlisted candidates will be required to present their original documents duly attested by HC at the time of interview. A lump sum monthly package will be offered to the successful/selected candidates depending on domain skills and relevant experience. Applications received after due date will not be entertained. The management reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason or cancel partial or whole recruitment process/advertisement at any stage. No TA/DA will be admissible for appearing in the test/interview. NDMA is an equal opportunity employer. डायरेक्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रैकेट में लिखा हुआ NDMA इस्लामाबाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इस्लामाबाद। GAB सरकारी मुलाजमत है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑडिट हाउस, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, सिचुएशन वैकेंट। Applications are invited from suitable candidates for recruitment in the Department of the Auditor General of Pakistan against the following post. Serial number 1, name of post/BPS, stenotypist BPS 14, number of post 3232, provincial/regional quota merit 3 पंजाब 15, ब्रैकेट में लिखा हुआ मेरिट 12, वुमेन 2, माइनॉरिटी 3,
minority 1 bracket close. Sindh rural is equal to 4 bracket merit is equal to 3 women is equal to 1. Sindh urban is equal to 3 merit 2 women 1. KPK 3 merit 3. Balochistan 2 merit 2. Ex-FATA 1 merit. AJ and K is equal to 1 merit. Eligibility criteria intermediate number 2 computer literate with shorthand and typing speed of 80/40 words per minute respectively. Age limit 18 to 30 years bracket including 5 years general age relaxation. Number 2 staff car driver BPS 4. number of post हैं 15. local based Islamabad / Rawalpindi is equal to 07. Lahore 04. Multan is equal to 01. Karachi is equal to 2. Peshawar is equal to 1. Eligibility criteria primary pass, valid driving license holder and well versed in the traffic rules. Age limit 18 to 35 years ब्रैकेट में लिखा हुआ इंक्लूडिंग 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन ब्रैकेट क्लोज. नंबर 3 डिस्पैच राइडर BPS 4. नंबर ऑफ पोस्ट 1. इस्लामाबाद इज इक्वल टू 1. लोकल बेस्ड. अच्छा, ये डिस्पैच राइडर की एक ही पोस्ट है जो कि इस्लामाबाद के लिए है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी पास. नंबर 2 वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स. एज लिमिट 18 to 35 years ब्रैकेट इंक्लूडिंग 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन ब्रैकेट क्लोज. नंबर 4 नाइब कासिद BPS 1. नंबर ऑफ पोस्ट हैं 110. लोकल बेस्ड इस्लामाबाद / रावलपिंडी इज इक्वल टू 33. लाहौर इज इक्वल टू 59. कराची इज इक्वल टू 10. कोयटा इज इक्वल टू 5. पेशावर इज इक्वल टू 2. मुल्तान इज इक्वल टू 1. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी पास. एज लिमिट 18 to 30 years ब्रैकेट इंक्लूडिंग 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन ब्रैकेट क्लोज. Important instruction / information. Only short-listed applications will be called for test / interview. 5 years general age relaxation has been included in the above mentioned column of age limit. Applicants already in government service should apply through proper channel. Applicants may apply for more than one post by submitting separate application for each post. Applicants shortlisted for interview will present his/her original documents along with set of attested copies of degree/certificates issued by HGC/recognized board/universities/institutes. Information provided in the application form will be verified, and in case of any false or forged information and fake or bogus documents, the Department of Auditor General of Pakistan reserves the right to cancel candidature at any stage. Department of the Auditor General of Pakistan reserves the right to cancel the recruitment process in part or whole, or increase/decrease the number of posts. No TA/DA will be admissible for the purpose of test/interview. Applications incomplete or received after the expiry date will not be entertained. ब्रैकेट में लिखा हुआ है नोट. Please do not attach any other document with application form except hard copy of CNIC's bracket close. The selected candidate shall be recruited/posted in any of the field offices of the Department of the Auditor General of Pakistan. The list of these field offices is available at www.ajp
www.agp.gov.pk, www.agp.gov.pk अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है करियर अपॉर्चुनिटीज टैब। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट www.agp.gov.pk of Department of the Auditor General of Pakistan. The application may also be submitted through National Job Portal www.njp.gov.pk. However, submission of application is mandatory before closing date and time. Applications along with copy of CNIC and one latest passport size photograph on the prescribed format should reach the undersigned in hard form within 20 days from the date of advertisement. डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 26 नवंबर 2023, डॉन संडे न्यूज़पेपर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोहम्मद अमजद रज़ा, डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर 0519219160, 0519219160। जी ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।